के साथ नहीं होने वाला उतना, बिकॉज मैंने एक दो बार ही फॉली का काम किया है, उसके बाद मैंने किया है, बट स्टिल आई नो कुछ बेसिस। तो बेसिक टेक्निक के साथ हम ट्राई करेंगे सारे एग्जांपल आपको प्रोवाइड करने का, ओके। और उसके बाद में प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे थ्रू वीडियो। सो सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पे रॉकेटरी मूवी सबने देखी है, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर उसको अगर फील्ड में दिखाना तो चैलेंज होता कि विदाउट यूजिंग एनी प्रॉप आपको वो साउंड क्रिएट करना है। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट दिस साउंड, राइट। वीडियो प्लीज मैम। सबसे बड़ा वेस्ट इंडिया के अंदर का, राइट। ठीक है, हम फेंक देते हैं वाटर बॉटल। सो सलमान भाई का एक सीन हम देखेंगे जिसके अंदर वो फाइट कर रहे हैं। रियल लाइफ में कितने लोगों ने हड्डी तोड़ी है, गर्दन मरोड़ी, किसी को मुझे नहीं पता, और कितनी आवाज उसकी आई वो भी मुझे नहीं पता। एनी फॉरेनर विद द ऑडियंस, पूरे इंग्लिश कंप्लीटली डोंट नो एनी फॉरेनर, प्लीज लेट मी नो। फाइन, सबको ओके। हिंदी लिटिल बिट फाइन। So basically what I'm trying to do is like I'm just creating some Foley effects live. So using this waste bottle, plastic bottle, I'm going to create this sound now. Let's see. Interested? Yes. Okay, let's try. Flames in web series and serials we can hear it very like clearly, right, about flames, but in real life it is not that possible. So real life में अगर flame की आवाज आती थी तो कुछ ऐसी आती थी, लेकिन web series और serials के अंदर ऐसे हम ये create कर सकते हैं by using this waste now. Once again plastic सबसे बड़ा waste अर्थ के ऊपर का, let's create. कोकोनट शेल, once again the best part, right? अगर घोड़े के पीछे दौड़ना है ना और साउंड रिकॉर्ड करनी है जैसे बोला गया था, तो शायद स्पीचेस नहीं एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी फेस के ऊपर, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन क्रिएट दैट साउंड बाय यूजिंग दिस कोकोनट शेल। सो लेट्स सी हाउ इट्स। Right, so जुगाड़ के साथ काम होता है, but still these people have some expertise. It was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. हाँ जोरदार लगा है, लेकिन इतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन साउंड में देना, जैसे कि